Hello everyone, welcome back to our lecture series of Riemann integrations. We have discussed the concept of Darboux integrations, Riemann integrations and Riemann-Stieltjes integration. अगर हम कहें तो Riemann इंटीग्रेशन पेपर के लिए ये तीनों ही कंसेप्ट एक एनालिटिक अप्रोच को हमें बताते हैं, या फिर हम कहें कि ये एक प्योर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन सभी कंसेप्ट को डिस्कस किया है। अब हम इस लेक्चर और आगे के कुछ लेक्चर्स में इन सभी इंटीग्रेशंस का एक अप्लाइड अप्रोच के साथ डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से जो कंसेप्ट हैं रीमान इंटीग्रेशंस और डार्बो इंटीग्रेशंस के, उन्हें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। So in this lecture we are going to discuss methods of integrations that you have already studied, और यहाँ पर हम specifically इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इनको डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया था वो डिफरेंट बुक से है, और ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है दैट इज़ फ्रॉम द कैलकुलस बुक रिटन बाय एंटन, एंड दिस इज सेक्शन 4.9 फॉर दिस पर्टिकुलर topic. Okay, so let us start this lecture by giving some important discussion of integrations. We know from the theory of integrations, जो आपने शायद 12th में भी पढ़ा है, कि जब कभी भी हमारे पास इस तरीके की इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन f of gx then time g prime x dx, अगर इस तरीके का है, दैट इज कि जो भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है दैट इज फंक्शन ऑफ gx, and then we have the derivative of this function gx, then in that situation we can substitute something or some variable for this particular function gx, and then by giving the simple differentiation operation we will have a simple kind of operation for the integration. So for let me write this, that for this, if we write that u is equal to z of x, okay, then du will be, you can see du will be equal to g prime x time dx, right? We have seen already in the class 12th, जब जहाँ पर हमने एक इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था। ओके, अगर हम u इज इक्वल टू जी एक्स और डी इक्वल टू जी प्राइम डी एक्स, इनका सब्स्टिट्यूशन अगर इस इक्वेशन में करें, लेट मी राइट दैट दिस इज नंबर 1, this is number 2, this is number 3. Okay, then on substituting 1 and 2 into 2 and 3, okay, 2 and 3 into 1, we have that if we write this one, then this integration will be transformed into integration from f of, now in place of gx we will write f of u, and g prime x dx will be du. Okay, and this is this simple integration of this function f with respect to the variable u, and at last जहाँ पर भी u होगा हमारे लास्ट रिजल्टेंट इंटीग्रेशन में, वहाँ पर हम u की जगह g पुट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर ऐसा मेथड है कि इन केस ऑफ दिस इज व्हेन वी आर नॉट हैविंग एनी लिमिट्स, जब लिमिट्स हो तो उस केस में हम लिमिट को भी चेंज करते हैं, जैसा कि हम करते ही आए। ओके, सो लेट मी राइट दिस इज सपोज नंबर 1, नाउ लेट मी राइट फॉर द नंबर 2. So for number 2, let me write that whenever we are having this kind of substitution like a to b f of gx, then g prime dx. Okay, so this is how we can have a different kind of integration. अब इसमें जैसे हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया था, तो यहाँ पर दो तरीके के हमारे पास मेथड है। एक तो वो मेथड जिसमें हम इस तरीके से u को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस f ऑफ u du को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर u की जगह हम वापस से gx को सब्स्टिट्यूट करके x की जगह हम लिमिट को पुट कर देंगे। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि द मोमेंट वी सब्स्टिट्यूट u इक्वल टू gx, तो यहीं पर ही हम लिमिट का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो एक तो ये मेथड है जिसके अंदर हम u इक्वल टू जी एक्स पुट करने के बाद एट लास्ट हम लिमिट्स का सब्स्टिट्यूशन करें, और एक वो मेथड है जिसके अंदर इनिशियल लेवल पर ही हम u को इंट्रोड्यूस करते समय ही
लिमिट्स का सब्स्टिट्यूशन करें. ओके, सो लेट अस आइडेंटिफाई दीज टू मेथड्स. सो लेट मी राइट टू deal with this integration, we have two methods. Okay, method first, let us try to write that. Method 1. So in this method, what we write that we just replace u and v only. Okay, so let u equal to z of x and du equals to c prime x dx. Okay, then what about this integration? A to b f of gx, then gx dx, that will be equals to integration from a to b f of u du. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस इंटीग्रेशन. बट यहाँ पर ये जो लिमिट्स हैं वो u के लिए नहीं है. तो बेसिकली ये जो फंक्शन बनने वाला है, सपोज दिस इज सम h ऑफ u और u की जगह हम लिखेंगे gx, और ये जो अब लिमिट है दैट इज फॉर x only. Okay, so this is from x equal to a to x equal to b. So to be more clear with this limit, let me write x is equal to okay, so these limits are for x not for u. तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास एट लास्ट जो भी u का फंक्शन आएगा वहां पर फिर से हम u की जगह gx पुट करेंगे और अब x को हम a से b तक वेरी करेंगे. सो दिस इज द मेथड 1. The another method that you have already discussed is, let me write that method 2 says कि हम u के साथ ही जैसे हम फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं वहां पर हम लिमिट का भी सब्स्टिट्यूशन करें. ओके, सो लेट मी राइट, सो लेट u equal to gx, then du is equals to c prime x dx, right? And also we are having that 8 x equal to a, u is equal to g of a, and x equal to b, u is equal to g of b. So now in place of a and b we will use g of a and g of b. Okay, so this integration from a to b f of gx, then g prime x dx will be equal to integration from, now we are having the variable u, so we will write here the for the lower limit we are having g of u, for the upper limit we are having g of b, and this integration is f of u du. ओके, सो दिस इज द अनदर मेथड जहाँ पर हम फंक्शन u को जैसे ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पर ही हम लिमिट का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट अस identify these two methods through the examples as well. So we are having example 1 and it says that use the above two methods to evaluate integration 0 to 2 x square plus 1 to the power 3 dx. Okay, x square plus 1 to the power 3 dx. Now let us identify the solution to this. और यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करना है. तो एक बार हम मेथड 1 से करेंगे और फिर हम मेथड 2 से करेंगे. ठीक है, सो लेट अस अप्लाई द मेथड 1 एंड मेथड 1 में हम एट लास्ट ये लिमिट्स का सब्स्टिट्यूशन करेंगे. सो लेट u is equal to this function x square plus 1, then this will implies that d of u is equal to 2x and this will be equal to 0. Now in place of x
हम क्या लिख सकते हैं? दिस implies that x is equal to du over 2. So in place of x we will write du by 2 and in place of x square plus 1 हम u को लिखेंगे. So from this discussion we are having integration x square plus 1 to the power 3 dx will be equal to integration. Now in place of x we will write du. So this 1 by 2, let me write this 1 by 2 will be here outside from the integration. In place of x we will write a du and in place of this we are going to write u cube du. Okay, and obviously अगर हम इसका integration करेंगे so this will be equal to 1 by 2 and here we are having u to the power 4 over 4 and this will be equals to u to the power 4 over 8. ओके, अब मेथड 1 में क्या है कि जो भी हमारा u फंक्शन है उसमें वापस हम gx को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हम x की लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? and let me write this is plus c as well. Okay, and this implies, and obviously which is equal to x square plus 1 to the power 4. In place of u we have written x square plus 1 and then we have 8 plus c. Okay, so thus from this discussion we will have that thus integration from 0 to 2 x square plus 1 to the power 3 dx will be same as the limit x square plus 1 to the power 4 over 8 plus c, and now we are having the limit from 0 to 2. So if you substitute these limits we will have the last one is 0, so we will have 2 and this will be 625 over 8 minus 1 by 8. So this 0 को substitute करेंगे तो 1 by 8 and obviously this is equal to 78. ओके, तो ये आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं. द मेन मेथड इज कि हम लिमिट्स को कब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड सेज कि हम जब u का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तब ही हम लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सो नाउ लेट u is equal to x square plus 1, then this will implies first that du will be equals to 2x and which will implies that x is equals to du by 2, right? Second, this is implies that 8 x equal to 0 u is equal to, now in place of x we will substitute 0, so u will be 1 and 8 x equal to 2 it will be equals to 5. So we are having these limit. Now in place of 0 and 2 we will use 1 and 5, right? So from this discussion, integration from 0 to 2 x time x square plus 1 to the power 3 dx is same as to calculate the 1 to 5 u to the power 4 u to the power 3 d u and then we are having same 1 by 2. Now if we integrate this then we will have this is equals to 1 by 2, then this will be u to the power 4 over 4 and the limit is 1 to 5, and obviously again this is similar to 1 to 625 over 8 minus 1 by 8 and obviously this is equal to 78. ओके, सो ये तो हम देख ही रहे हैं कि किसी भी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमेशा सेम ही आंसर आएगा, सेम ही इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी. अब ये सब किस मेथड पे या फिर किस थियोरी पे काम कर रहा है उसके लिए वी आर गोइंग टू हैव अ थ्योरम एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. हमने इसको बिना प्रूफ के ही बार बार डिस्कस किया है. नाउ एट दिस मोमेंट वी आर गोइंग टू हैव द proof of this theorem. Okay, this theorem says that if g prime, which is derivative of g, is continuous on closed interval a comma b
and this function f is continuous on an interval containing the values of zx for a less than equals to x less than equals to b, then we are having this integration. A to b f z of x z prime x dx is equals to integration from ga gb f of u du, where obviously this u is nothing but a new variable that is always equal to this gx, right? So this theorem says कि ये integration और ये integration same ही होंगे with the supposition that this u is equal to g of x, right? Where this u is equal to g of x. Now let us have this only its proof, और proof में हम fundamental theorem of calculus को use करेंगे, because if we are having the derivative and we want to identify the value of integration, तो हमें अगर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को एक साथ डिस्कस करना है तो उस सिचुएशन में वी कैन थिंक अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. सो